MX प्लेयर पर जल्द आने वाली है नई वेब सीरीज जिसका नाम है धारावी बैंक और वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू करने जा रहे हैं सुनील शेट्टी जो बने हैं गैंगस्टर। साथ ही हैं इस वेब सीरीज में विवेक ओबेरॉय जो निभा रहे हैं पुलिस वाले का किरदार। वैसे ये वेब सीरीज 19 नवंबर को रिलीज हो गई है और ऐसे में प्रमोशंस के लिए सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय पहुँचे हैं धारावी डायरेक्टर समीत कक्कड़ के साथ। तो आइए सुनील शेट्टी से जानते हैं उनका ये एक्सपीरियंस। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ आज तक में है द मैचो मैन जिसे हम 90s से पसंद करते हैं, वो है सुनील शेट्टी। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुनील शेट्टी और मेरे साथ है समित कक्कड़ 90-year-old समित कक्कड़ मेरे डायरेक्टर। तो मुझे ना एक्चुअली आई वांट टू गो बैक बिकॉज आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स सिंस द 90s। आई एम अ 90s किड, ओके, सो आई हैव वॉच्ड ऑल योर फिल्म्स जहां आप एकदम मार धार वाले फिल्म्स करते रहे, रोमांटिक भी करते थे, पर मुझे आपका वो फेज बहुत पसंद था। यहाँ पर भी फैंस और जिसने ट्रेलर्स देखा है, दैट इज द वन थिंग दैट पीपल लाइक is that you doing that kind of role. Yeah. How does it feel to come back to doing that role? Superb. देखिए इंटेंसिटी हमेशा वर्क करती है हमारे फिल्मों में हो या वेब सीरीज में हो। जब लेयरिंग अच्छी होती है, फैमिली होता है, एक कहानी होती है, और आई थिंक धारावी वो एक ऐसी कहानी है जहाँ आपको थलाइवन की पूरी फैमिली दिखाई देगी। और खास करके मैं आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे अभी दृश्यम कल फिल्म रिलीज हुई है एंड इट इज डूइंग सो वेरी वेल। इट इज डूइंग वेरी वेल क्योंकि एक फैमिली है, एक कहानी है, एक ड्रामा है, कंटेंट है, अलग अलग कैरेक्टर्स कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विवेक है, विवेक की अपनी फैमिली है, उसकी पुलिस की अपनी फैमिली है। द ड्रामा जस्ट वर्क्स, इट्स एक्साइटिंग और आई एम एक्साइटेड क्योंकि बहुत वक्त के बाद मैं कुछ करने जा रहा हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि आई विल नॉट डिसअपॉइंट माई ऑडियंस, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ की मैंने, तो इस बार यही चाहूँगा कि आई डोंट डिसअपॉइंट द ऑडियंस। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो आपने बहुत सारी गलतियाँ की है? इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स यू आर टॉकिंग अबाउट द चॉइसेस दैट यू मेड इन choices that I made, they didn't work. Though I have a very good fan following, I know I have a lot of love, but I messed up somewhere or the other, and पैसे नहीं दे रहे लोग देखने के लिए। पैसे जब देते हैं जब आप satisfying content देते हो, और जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करोगे ये, तो सुधरोगे कैसे सुधरोगे? क्योंकि हम बोलने में ही रह जाते हैं, सुनते नहीं है, और जब आप सुनते नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप में है कि मैं सब जानता हूँ, वो सुधरता नहीं है। So when was this realization that you had? कब आपको ऐसा लगा? When my film started flopping, when I took a break, when I spent 4 years with my father, the family, then came the pandemic. तब बहुत सोचने का मौका मिला, and then I realized, yes, X, Y, Z में content था ही नहीं. My heart, my soul was not in it. Why was I doing it? कहीं ना कहीं I don't know what happens, but I think everybody goes through that phase. इसलिए कहते हैं कि with every rise comes a fall, and in that fall अगर आप अपने आप को संभालते हो और अपने आप में बिलीव करते हो, तो complete destroy होने से बचते हो। I haven't been around for the last 6-7 years, लेकिन लोग भूले नहीं। मीडिया ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मुझे जिंदा रखा, वो itself बहुत बड़ी बात होती है, and I stay indebted to all that. So आपको धारावी बैंक में ऐसा क्या कंटेंट और क्या रीजन था आपका धारावी बैंक to be associated with धारावी बैंक? Story कहानी। जब Ashima from Z came to me for the first time and said, Anna, we have something and we would like you to listen to it. तो जब मैं सुना
और सिनॉप्सिस में मेरे पास मुझे भेजा गया, तो पहले चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व किया और उनसे कहा कि भाई 2 कैरेक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें विच आर वर्थ डूइंग, दैट आर वर्थ डूइंग। एक है थलाइवा का और दूसरा है इंस्पेक्टर का। अगर इंस्पेक्टर का किरदार के लिए आ रहे हो मेरे पास, मैं नहीं करना चाहूँगा। Why? क्योंकि मैं बहुत कर चुका हूँ। Okay. यू नो आई लव द यूनिफॉर्म, कि इससे बेटर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कैमरा, परफॉर्मेंस, स्टोरी टेलिंग, कंप्लीट मास्टरी ओवर एवरीथिंग। सो आई सेड दिस इज एक्साइटिंग एंड दैट्स व्हेन आई डिड। एंड फिर मेरी बात हुई संजय गुप्ता थे। So I think Sanj was planning something with Samit and he said, "Anna, you're working with Samit on that. He is a crazy director." So, you know, and I believe in what Gup says, because Gup has this crazy passion for cinema. And फिर Vivek came into the film, the rest of the casting came, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि, you know, probably I've taken a great decision and I hope it is. Seems like it, but yeah. So even Samit said the same thing, that you were his first choice. आप हमेशा से first choice थे. कितना आपको ग्रिलिंग था ये, मतलब from the character to the action sequence to being in that costume? जहन में हमेशा और जिंदगी में हमेशा etched थे, तो वो है दयावान और नायकन, कमल सर and विनोद खन्ना, my 2 heroes, the 2 men of the Indian film industry. तो कहीं ना कहीं as a fan, you know, you always say यार ये wish list में आ जाए तो मजा आ जाए, you know, and came Thalaivar to me. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर 10% भी परफॉर्मेंस मैं मैनेज करूँ उन जैसा, I think it's a great job. Samit will immerse you into Dharavi, you know, he will get you, he will make sure that you feel you're a part of that place. You know, you see these narrow lanes, but there's so much warmth, there's so much love. And if Thalaiva is set here, मजाल है किसी की कि वो अंदर भी आ सके, क्योंकि कहाँ से आना है कहाँ से निकलना है कोई समझेगा ही नहीं. It's very difficult, and that is why 15 years he stayed in this in Dharavi, but the police or nobody could come and get him. Correct. You know, I've seen great shows on television. You know, I've seen the narcoses and everything. There were stories, they were brilliant stories, but everywhere the man who led the entire terror everywhere time ran away when you know you had the department or anybody come to you. Correct. You know, Pablo Escobar was running. Thalaiva never ran. He said, "Ow, come get me if you want me." But nobody could enter. And nobody could enter. So that shows the strength of an individual and the faith the people had in him and he had on the faith. So what he's doing may be wrong. Oh, correct. But what he's doing for the people is right. You know, and for me, the minute you have a character who's got a heart, it works. ऐसे characters play करने एकदम hardcore, if I can say negative characters, yeah, or you know, yeah, gray, black, character, yeah, gray moving to black. Correct. But it works when there's a purpose. Right. अगर सिर्फ negative play करना, I will never do it. Okay. क्या कैरेक्टर है, उस पर क्या बीती होगी, उसकी जिंदगी में कौन है, how much does the family mean to him, you know, how much do his children mean to him, how much do the people of the area mean to him, why is he a Messiah, why is he a Robin Hood for all of them, then it works, because the emotion is just right. And when you back your character with an emotion, you have people who are watching you, the end user, who also loves you and loves the character and goes with it. Right. You know, and when you've got to love every part of what you're watching to be able to enjoy it. Right, wrong, good, bad, some trait. Otherwise, they'll disconnect with the character in between. And that is what Samit manages to do. Right. He etches each character very, very beautifully. That is what Sarthak has managed to do. Sarthak has layered it so strongly. Sinika, you know, that girl. I mean, the girl has written the dialogues of Dharavi.
Wow. Nobody can even imagine. You would believe, अरे ये रजत अरोरा या अनीस बज़मी या ऐसे दिग्गज राइटरों का काम है. But there's this young girl who's delivered the dialogues of Wow. Dharavi, which is amazing. Somebody who's probably lived in High rise. the high rise of Mumbai, talking to you about the heart of Mumbai, you know, This which is amazing. This is also one place which I would like to show, because Yeah. here is nobody can shoot here, because we did a very big bomb blast sequence Action in the sequence. same lane, Huh. and because Yeah, of car the people flips, of yeah. Dharavi and their love that they allowed us to do it, because otherwise it is so difficult, because it's risky also. Right. Basically all these sequences are done on set, but Anna, me, we were like, we should use real locations, and only then the authenticity is gonna come in. Dharavi will be shown, and this is where is this place where we did that mad action sequence. No, but even now, if you see, Yeah. this has been a part of my life. Mumbai is a part of my life. I'm a pure Mumbaikar, But again, what do you see here? Do you see unruly people? Do you see rude people? Do you see people who don't know how to behave? You will see love and affection. You tell me where else this is possible. Come walk with me in any other city in India, and let this peace happen. आप मुझे एक बताइए, मैं आपको एक हिट फिल्म का नाम दूंगा, आपको डायरेक्टर का नाम आपको नहीं मालूम, बैनर का नाम मालूम होगा. जब तक द कैप्टन ऑफ द शिप का नाम नहीं आता, it was Manmohan Desai's film, it was Subhash Ghai's film, it was Yash Chopra's film. Today it is XYZ Corporate, जिनको पैसे जमा करने आता है, लेकिन खर्चा करने भी आता है, लेकिन बनाना आता है. It's the sad part. And till the time we do not face this truth, हमारी हालत यही होगी. It is a Rajamouli film. It's a सुरेंद्र रेड्डी फिल्म. साउथ में आप बोलते ना साउथ, क्यों? इस वजह से. तब तक आप पिता को, घर के जो मेन लीडर है, जो सरस्वती को कंट्रोल करते हैं, उनको आप सामने नहीं लाओगे, कुछ नहीं होने वाला. Where do you think हम गलत जा रहे हैं? हम गलत यही साल 2 साल के डायरेक्टर्स को, स्कूल से आए हुए डायरेक्टर्स को, अगर हम देखिए, मेरा मानना ये है, और मेरी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस है कि जब आप स्कूल से निकलते हो तो आप एक एम्प्लॉई होते हो, और आप जब एक्सपीरियंस से निकालते हो आप एक एम्प्लॉयर होते हो. पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के साथ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस निकालते हो और पढ़ाई के साथ आते हो और बोलते हो मैं करूँगा, तो आप में डर बहुत ज़्यादा है. आपने डेस्टिनेशन देखा है, आपने पाथ नहीं देखा है, तो आप करते क्या हो? नौकरी पे लग जाते हो. लेकिन कभी कभार जब आप कभी कभार पढ़े भी नहीं हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, तो नौकरी पे आपको कोई रखता नहीं है, तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? बिजनेस, एंटरप्राइज, फेलियर, सक्सेस. तो असिस्टेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है. ऑल दीज पीपल हैव कम अप विद बोथ. एडिट भी किया है, इज बीन एन एडिटर ऑल्सो, तो इसको पता है कि शॉट को काटना कहाँ है. विजुअली दिखता है. आप जेबी दत्ता को बोलो या ऐसे करते थे, हाँ कैमरा लगाओ, नो प्रो व्हाट डू यू कॉल दैट, टेली मॉनिटर्स. तो जेबी जी से हाँ नीचे थोड़ा, नहीं सर परफेक्ट शॉट है, झाड़ का टिप क्यों नहीं आ रहा है, एंड ही इज नॉट इवन लुकिंग एट इट. ही नोज बाय द एंगल एंड द लेंस कि झाड़ का टिप आ रहा है. बोले हाँ सर झाड़ का टिप तक काट. दैट इज जेपी दादा. When it's cut, he'd do and he'd walk away because he knows कि मेरे एक्टर ने काम दे दिया और मेरे को शॉट मेरा मिल गया. मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ वो क्या कर रहा है, बाकी मुझे पता नहीं. That is direction. We also never use monitors. Exactly. Not a single Wow. monitor. तो सर मुझे एक बात बताइए, this is your debut kind of a thing on Absolutely. OTT platform. It is my debut. Yeah, it is your debut. Nervous? Very. Pressure? Very. Hell of a lot. मैं तो एपिसोड भी नहीं देखा, डर के भागा हुआ. और नर्वसनेस की वजह से भी नहीं देखा हूँ, और कॉन्फिडेंस की वजह से भी देखा हूँ. कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं, कॉन्फिडेंस ऑन द एंटायर टीम, whether it's MX, whether it's Z, whether it's Summit, the entire team, the writing. So when you know कि नहीं यार एक टीम ने संभाल लिया अपने आप को,
तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन तो होगा, सक्सेस फेलियर तो कोई बोल ही नहीं सकता, लेकिन एक अप्रिशिएट तो होगा। लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि क्या किया उन्होंने, ऐसे तो नहीं होगा। His performance, you will see a new. He is just brilliant in it because he's worked on himself. He didn't just come on the set and say कि हाँ मेरे को lines दे दो, मैं बोल दूंगा, आप लोग edit में ठीक कर लेना. No, he worked on everything, every detail, and he also worked on the other characters. He gave them the space to speak. He gave them freedom. ऐसा नहीं कि मुझे lines चाहिए. No, when they are talking, he's listening to them, and that, you know, hearing them in the ऊपर से eyes में that emotion. I think that is what makes the. तो अभी आपके फैंस का एक दे आर अपसेट, वो नाराज है कि आप ज्यादा फिल्म्स नहीं कर रहे हो, ज्यादा मतलब व्हेन या लेकिन क्या है ना, फैंस का सिर्फ प्यार है, मैथ तो वो लोग समझते नहीं है। जब मैथ, हाँ लेकिन मैथ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोऑपरेट्स डिसाइड करते हैं कि पैकेज क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। जब मैथ बैठ जाएगी, और वो परफॉर्मेंस के ऊपर है। अगर अब मैं डिलीवर करूँगा, you know, and appreciation is there. I'm doing some amazing work right now. और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोगों ने धारावी देखा है, धारावी के बारे में सुना है, उन्होंने क्लिपिंग्स देखा हुआ है, MX हो, Z हो, you know, छाती ठोक के बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है हमारा। तो लोगों को अब भरोसा आने लगा है। अब ये भरोसा मैं तोड़ूंगा नहीं और टूटने दूंगा भी नहीं। You know, you'll see me in a lot of work. I'm doing a lot of work. लेकिन again, मैं 21 साल का सोच के नहीं काम कर रहा हूँ, 60 साल का हूँ और वो सोच के मैं काम कर रहा हूँ। Something that suits me. I should not see myself and say कि क्या कर रहा है यार तू। I should never get embarrassed of what I'm doing. Nor my children, nor my mother or my wife, you know, or the people who are associated with me, are a part of my family. They should never say, what are you doing at this age? And why is he doing? Yeah. So you that discuss grace, your work with them? 100%. 100%. My son is, मेरी और इसकी ग्रूमिंग साथ में हुई। हाँ. इसमें कौन सी फिल्म में? धारावी में, बैंक में। अब चोरी कौन करना चाहता है डायरेक्टर को? आहान बोलता पापा आई वांट टू वर्क विद हिम, पापा आई वांट। ये होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस। एक बच्चे को भी कॉन्फिडेंस है कि नो नो पापा आई वांट टू वर्क विद समित सर, आई वांट टू वर्क विद समित सर। Akia tells me that. So that is a big, that is appreciating that also for the choice that he's made, which is superb. So how do you guide them in their careers as well? What films to Yes, take, what to do? yes. More than what films to take, how to go about filming, how to go about behaving, how should you behave, you know, and what should be your priority in your life. That's all. Otherwise, they are very smart with what they do. Ahan and Atia both watch a lot. Ahan is only watching cinema. You tell him anything and he'll give you a reference. Yeah? Baba, reference, which is fantastic. So I know he'll take care of himself. But I might tell him the choice of a production house. You know, check this director out for this film. You know, this guy is good for this. So which they listen to, and I'm blessed that you know, my children still listen to me, still discuss with me, and that we are super friends. Nice. Since you only brought up your age, you don't look your age, you don't look 60. How do you maintain yourself, and how do you keep yourself so relevant? I think discipline, very disciplined, Most important thing. and I'm very aware of my being, what I am, where I stand. You know, when it comes to cinema, where do I stand when it comes to life? What is my position with my family? What is my position when it comes to my knowledge on business or health? And today, if I've connected with the youth and I'm relevant, it's because of my fitness. You know, because probably they see dad at home and say 62 पे ये कैसे ऐसे हो सकता है? You know, when something is rare, it becomes more valuable. And I talk about it because I want the kids to go back home and tell their parents, you know what? You don't have to get old. Just look at Sunil uncle. Yeah. Or for them to say कि shit यार, we can be fit till that age. तो ये जो छोड़ देते हैं ना लड़के खास करके, once they are married and once they are at work, just a reminder that don't drop yourself till 45 and then find yourself. Just don't lose yourself. Take that 1 hour out of your life and say, this is my me time. Yeah. You know, this is the time that I give myself. Right. You know, yes, I drink,
let me do it on a weekend. Yes, I eat crazy. Let me do it once in a week. It's about just rationing and delivering something that is reasonable and that will help you in the long run. There are no don'ts. One life to live, live it king size. Nothing that one shouldn't do as long as it doesn't harm somebody else or themselves, but in limitations. Talking about discipline, Sunil sir, the 9 o'clock shift, he is on set in Dharavi Bank at 5 o'clock in the morning because he used to take 4 hours for prosthetics. Nobody does that. This is the level of dedication and discipline and focus that we have learned from. I think so that is important. You see, that is because there was a certain budget which fits a Sunil Shetty, Vivek Oberoi setup, Samit Kakkar. So if I come at 9 o'clock, then till 1 o'clock I lose myself. Which means my director has to hurry. And with this kind of location, my director would have to focus more on khatam karte. So to avoid that, so that nobody has a problem, you come on time and you get ready on time. And we didn't have any Hollywood prosthetic artists. Renuka, A young girl, Renuka. 24, 24. Yeah. did my prosthetics. And magical work she's done. So Dharavi has shown that kind. Even now, the entire production is being handled by local boys from Dharavi. Just see how they're handling it. Yeah, absolutely. Magical. मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हम यहाँ चलेंगे तो ऐसे सब आएंगे, क्राउड आएंगे, आप देखिए, डिस्टर्ब आप करेंगे, देखिए, कोई नहीं. Artists, they know that we are appreciating them. They're excited. You see each one's face, they're excited. But that excitement is about what? About seeing you. And about the place they stay in. Absolutely. This is a place, it's their home. Yeah, I think absolutely. so that is such a, to be proud of. We had 4 young girls who were handling the artwork of Dharavi. Wow. So what happens is, what is my takeaway from here? कि नए टैलेंट में जो पैशन है और ताकत है, तो शायद अगर मैं अपने पीक पे होता ना, तो मैं भी मांगता कि आर्ट डायरेक्टर कौन है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी, आपको लगता हाँ यार ये नया है, लेकिन रिजल्ट देखो. तो एक लेसन है मेरे लिए कि सक्सेस हो, फेलियर हो, जुड़ो सिर्फ उनसे जो पैशनेट हो, जुड़ो सिर्फ उनसे जिनको ज़रूरत है, और जो मर मिटने के लिए तैयार है अपने काम के लिए और अपने चीज़ों के लिए. गोपी किशन, there's Bhai, very close films, very close to my heart. Dhadkan, the pure simplicity of the romance, and of course Gopi Kishan. मैं चाहूँगा कि यहाँ नहीं करे. I wouldn't want anybody else to do it, but yeah, Gopi and Kishan, an opportunity for me to showcase my talent when it came to comedy. Timing with comedy, which I always used to tell people, like, People always saw you in that. Action. Macho Man. And that's what the distributors wanted it because they knew what sold. Right. अभी हेरा फेरी की भी बात हो रही है कि part 3 आने वाला है. How excited are you of that? Very excited, but still very early. Half knowledge about everything because I haven't had an opportunity to sit with the producers and understand what is going on. कि फिलहाल हेरा फेरी चल ही रही है उसमें, news every day. बहुत time पहले भी announce की थी. I still remember you had a grand launch of it. Yeah, absolute. So just waiting for things to settle down. Maybe by the weekend or early next week, I'll sit and understand what is going on. Okay. And because we were committed to do the film, then suddenly the twist of Aki not doing it. Yeah. So, and but Karthik was anyways not playing Raju. Okay. It's a completely different character. A very important role, but a completely different character. So I don't know what has happened, and it's unfair of me to comment and say anything that might mislead. So let's wait and watch. Yeah. एक एक्टर और एक्ट्रेस जिसके आप मिस करते हो आपके टाइम से जो मिस करते हो काम करना. Yeah, I think all my co-artists, be it Ajay, be it Akshay, be it Akshay Khanna, be it Sanjay Dutt, we've had such phenomenal time shooting. 20 Jan LOC में, Abhishek, Ajay, Saif, myself, and like brothers through it.
सीन इसका है, डायलॉग तू बोल देना। ऐसा होता था। संजय दत्त को बोला हाँ बोल देना डायलॉग यार, और आज डायलॉग के लिए झगड़ते हैं लोग कि मेरा है मेरा है। मैं सर मेरे को ज्यादा दे दो ना। दत्त को बोलेगा, दत्त बोलेगा बोल दे यार पूरा। अजय बोला बोल दे यार, क्योंकि क्या है जब फिल्म चलती है ना तो सभी को क्रेडिट मिल जाता है। That comes under my hit also. Right. You know, Right. somebody's job must be extraordinary. Border, super duper hit. Sunny Deol, outstanding. Akshay Khanna, outstanding. फायदा मुझे भी तो हुआ ना। भैरव सिंह को भी तो याद करते ही है ना। फिल्म चला के लेके गए। We were what? We were the Indian Army. So that's how I see it, and that's how the generation has to see it. Unfortunately, generation को सोचने का टाइम ही नहीं देते, क्योंकि एजेंट्स इतने हावी होते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, नहीं धारावी में गंदा है वहाँ मत बैठो, अरे वैन है क्या ये जो पेरिफेरी अगर हटा दी जाए ना, या उनको भी एजेंट्स को भी उनका घर दिखाया जाए कि आप भी काम एग्जैक्टली कि ये देखे कि लवली कंटेंट यार। आप मैं अगर समित को कुछ बताता हूँ कि समित ये है यार, ऐसा करते हैं, समित से हाँ सुपर। जिस दिन मुझे लगा कि यार ये तो मैंने ही डायरेक्ट किया हुआ, खत्म। तो आपका डायरेक्शन का प्लान है? नहीं, लेकिन इन्वॉल्व रहो, वैन से बाहर निकलो, उसके बाद बातें मत करो। आई थिंक ये बच्चन साहब से सीखा है मैंने कि वैन के अंदर सब डिस्कशन होती है, वैन के बाहर कोई डिस्कशन नहीं होती। आप कैप्टन हो, आप जो बोलोगे मैं वो करूँ। जाते जाते आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहते हैं? आप यही कि समय हम सब ने बहुत मेहनत किया टू गिव यू अ प्रोडक्ट दैट हमें लग रहा है कि आपको पसंद आए, और ख़ास करके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं बार कहता हूँ कि मैंने गलतियाँ बहुत की थी। इस बार गलतियाँ सुधार के कोशिश है कि कुछ अच्छा दे सकूँ। होप यू गाइस लाइक इट एंड ब्लेस अस। मुंबई से अनीता ब्रितो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।